So first of all, we are going to discuss what energy is and what we are going to learn in this chapter. So basically, energy is defined as ability to do work. We have two types of energies, again, mechanical and electromagnetic. You must have remembered it from the waves as well. And they have the same meaning here, medium independent and medium dependent. There are certain forms of energies which could be stored only, which could be which can be stored, and there are certain forms of energy which could only be transferred. For example, जो है chemical potential energy could be stored in a body, electrical energy could be stored in a body, which is then converted into chemical potential energy, is converted into potential energy, and so forth and so on. So there are certain energies which could be stored in our body or generally, and there are certain forms of energy which could only be transferred. There will be examples. I will circle it out for you so that you can remember which is an energy store and which is an energy transfer. But the major thing is to understand the meaning of energy stored and energy transfer. What is the meaning of energy store? That you could store this type of energy, for example, chemical potential energy. And this is the type of energy which could only be transferred, which is, for example, it's an electrical energy. Sorry, light energy. Light को आप store कर सकते हो? Can we store light? No. ठीक है? So it comes under the category of energy transfer. So are we clear about energy store and energy transfer? हाँ जी. Okay. There are basic two types of energies which we discuss, and that is energy, kinetic energy. I hope you're familiar with these terms. What is kinetic energy? It's the Possessed by a movement of body due to particles. it. Very good. Possessed by a body due to its motion, and its formula is given as 1 by 2 mv square. Unit is given as mass का unit क्या होता है? Kilograms. Velocity has a unit of meter per second. So since we have square, so it would be meters per second square, and it also could be written as joules. ठीक हो गया? That is kinetic energy. The other form of energy is defined as potential energy. And potential energy is the energy stored due to its position or height from the surface. Potential energy is further divided into three or more, that is chemical potential energy, elastic potential energy, and gravitational potential energy. I will show you the definition of chemical potential energy and elastic potential energy on the way, but gravitational potential energy को हम अभी define कर लेते हैं. It is given as mgh, and that is basically due to the gravitational pull of the ग्रेविटेशन एनर्जी ऑफ द अर्थ होती है ना, ग्रेविटेशन पुल ऑफ द अर्थ की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है बॉडी के अंदर, पोजेस करते हैं, सॉरी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल, ग्रेविटेशन पुल ऑफ द अर्थ. Here m is the mass of the body, g is the gravity, and it has a fixed value of 9.8 meters per second square. इसकी वैल्यू हमारी एग्जाम्स की इंस्ट्रक्शन में दी भी होगी.
and h is the height from the Earth's surface. ठीक है? केमिकल पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम लोग जनरली डिस्कस करें तो जो एटम्स की अरेंजमेंट की वजह से एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी इज नोन एज केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन अ compressed or stretched spring is an elastic potential energy. केमिकल पोटेंशियल एनर्जी की एग्जांपल्स होती हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन अ बैटरी is a form of chemical potential energy. Energy stored in food is a chemical potential energy. So when we eat that food, that energy is stored into our body. So let's see what our book is walking us through. Energy stores and energy transfers की सबसे पहले उन्होंने examples discuss किए होंगे that ये energy देखो, energy stored in the body is converted into kinetic energy into thermal energy. Every form of energy eventually converts to which form of energy? Thermal potential energy. Thermal energy. Thermal energy could be considered as a waste energy. In certain cases, any energy would be considered as a waste energy if it's not something we require. For example, if you're turning on a bulb and जब लाइट जलती है, so साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है? So heat is not required, we only need light, so there heat would be considered as a waste energy. And in a heater, heat is a useful energy, so eventually most of the energies eventually converts to the thermal energy. And this is considered as a waste energy because this is not one we require. So this is the energy stored, this is the energy transferred. They might have discussed that into the other examples as well. Here, the definitions of the, मैंने जो आपसे कहा था आगे आएंगी भी हमारे पास. A moving object has kinetic energy. To faster an object moves, the greater its kinetic energy is. If you lift an object upward, you give its gravitational potential energy. So if you lift something off the ground, which form of energy would it have? Gravitation potential energy. Kinetic energy is being converted into gravitation potential energy. Whenever we are discussing about energies, we are discussing about its transfers only. We cannot create energy, nor we can destroy energy. Keep this in your mind. Whenever we are discussing about energies now, we are only discussing about their transfer. ठीक हो गया? We cannot create or destroy energy. We can only convert it from one form to another. जैसे when the man was running, उसके पास कौन सी energy stored थी? Chemical potential energy. When he started running, that chemical potential energy is converted into kinetic energy alongside with the thermal energy. Obviously, our body gets heat up. So chemical potential energy converted into kinetic energy and thermal energy. Are we clear? Then chemical potential energy की discuss की हुई है कि fuel, batteries, food, they all have chemical potential energy stored into it. So then we have nuclear energy, energy stored in the nucleus of an atom. Strain energy is basically the elastic energy जो मैंने आपको अभी explain किया था, energy stored in a stretched or compressed ball. Internal energy is defined as the sum of all forms of energies, whatever the system has. Let me write it down. इसमें तो लिखा हुआ है इसने, if you stretch or compress it stores strain energy. Strain energy is also known as elastic energy. Nuclear energy is the energy stored in the nucleus of an atom. It is further divided into two types of energy: nuclear fission and nuclear fusion. Fission is defined as the breaking of bigger nuclei
into smaller nuclei. A lot of energy is emitted while this is happening. Nuclear bombs के बारे में तो सुना होगा ना? You must have heard that term. Nuclear bombs is basically nuclear fission की वजह से होता है. Nuclear fusion is the opposite, combining two small nuclei to give a bigger nucleus. इसके अंदर we normally use hydrogen as fuel and we get helium as product. Fuel and it's a product. ठीक है? And it occurs in sun. This only occur in sun. Sun के अलावा ये reaction कहीं पे भी नहीं होता. Stars वगैरह के अंदर basically होता है. And fission के अंदर हमारे पास fuel जो होता है वो हमारे पास यूरेनियम होता है. And product में हमारे पास प्लूटोनियम और क्रिप्टॉन्स वगैरह जो है वो बन सकते हैं. In दोनों में large amount of heat energy is emitted and that energy is utilized to heat up the water. न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए मल्टीपल यूजेस हैं उनके जो उन्होंने यहाँ पे डिस्कस भी किए हैं. इंटरनल एनर्जी को डिस्कस करे थे. इट इज द सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज. Sum of all forms of energy. It would have kinetic energy, potential energy, thermal energy, whatever the system has, whatever the form of energy the system has is internal energy. Mostly thermal internal energy को associate किया जाता है with the thermal energy. So if a system has internal energy, sorry, if the temperature of the system is increased, so उसका thermal energy increase होगा, so does its internal energy. And thermal energy जो है हमें पता है is the form of heat energy. Let me take you back to one of the page जिसके ऊपर ये सारी definitions दिए हुए हैं. Just one second. Can you see the screen now? Energy is the ability to do work. Its unit is given as joule. Energy is converted into two major types, kinetic energy and potential energy. Potential energy is the energy stored in the system. This form of energy is due to the state, shape, or position of the system. There are different types of potential energies. Chemical potential energy is stored due to the position of atoms. And इसकी एग्जांपल आती है food, fossil fuels, batteries. ठीक है? Then we have elastic potential energy. It is the energy stored in a compressed or spread spring या elastic deformation की वजह से जो energy stored होती है ना spring. Then we have gravitation potential energy is due to its height from the ground surface and its formula is given as mgh. Elastic potential energy का formula होता है हमारे पास. That's not the part of our syllabus. मैं बस ऐसे ही लिखवा रहा हूँ कि elastic potential energy is given as 1/2 kx square or 1/2 fx, and gravitation potential energy is given as mgh, and kinetic energy is given as 1/2 mv square. उन्होंने definition भी दी हुई है. Energy due to its motion as kinetic energy. Then the other forms of energies are the उन्होंने कौन कौन से डिस्कस की थी. थर्मल एनर्जी डिस्कस किया हुआ था. एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स टेम्परेचर. हॉटर बॉडीज की थर्मल एनर्जी इज बिगर देन दोज ऑफ द कोल्डर बॉडीज. न्यूक्लियर एनर्जी जो न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होती है न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से. न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन. न्यूक्लियर फिशन में बिगर एटम्स स्प्लिट इनटू टू स्मॉलर एटम्स एंड फिशन में two smaller combines to give a larger atom. Light is a form of energy, electromagnetic, that is gives us sensation of Vn. And sound energy भी, sound is also a form of energy. वो हम लोगों ने पहले ही उसको डिस्कस किया हुआ है. What is that form of energy? कौन सी है वो एनर्जी? साउंड इज अ मैकेनिकल एनर्जी और कौन सी एनर्जी आती है हमारे पास? इज इट अ मैकेनिकल एनर्जी और कौन सी एनर्जी है?
मैकेनिकल। यस। अब यहाँ एनर्जी स्टोर्स एंड एनर्जी ट्रांसफर की कुछ एग्जांपल्स हैं। एनर्जी स्टोर में काइनेटिक आ जाती है, ग्रेविटेशनल, केमिकल, इलास्टिक, न्यूक्लियर, इंटरनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब अगर इसमें केमिकल एनर्जी आ रही है तो ट्रांसफर के अंदर हमारे पास क्या होगा? इलेक्ट्रिकल, थर्मल, लाइट एंड मैकेनिकल सच एज साउंड। ठीक है, यू नीड टू मेमोराइज दीज एग्जांपल्स एज वेल कि इसके अंदर कौन कौन सा हमारे पास चीज आ रही होती है। एनर्जी स्टोर्स में अगेन आपको बता दूं कि विच कुड बी स्टोर्ड एंड कैन बी यूज्ड लेटर, और एनर्जी ट्रांसफर वो कौन होती हैं विच कैन नॉट बी स्टोर्ड बट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये उनकी एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। Energy can be transferred from one form to another within the same object. For example, by a force, if you lift something, you give it a gravitational potential energy, you provide the force to lift it. Alternatively, you can provide the force needed to start something moving. So, energy stored and energy transfer by heating, by radiation, and by electrical current. These 4 points you need to keep in your mind. These are important. Okay, how you can transfer energy. So we can transfer energy by force, by heating, by radiation, and by electric current. Energy stored to story होता है. Energy could only be transferred by applying force, or by heating it, or by giving thermal energy, or by radiations. Radiation is also a kind of a thermal energy. And what was the last point? We can like by electric current, because ये सारे energy transfers में आ रहे थे. So energy could be transferred using all these. You can read these points on your own and you'll get the idea कि उसके अंदर क्या है. Let me read the last part उसके अंदर. An electric current is a convenient way of transferring energy from place to place. The electricity may be generated in a power station many kilometers away from where energy is required. Alternatively, an electric current transfers energy from the chemical energy stored to a flashlight of the battery. This increased internal energy stored of the bulb is transferred to the surrounding via light radiations. And light reaches us from the sun. This is how energy is transferred from sun to the earth. Some energy is also transferred by infrared and ultraviolet radiations further on. Do you get the meaning of energy transfer now? How can we energy transfer? How can we transfer energy? We can transfer energy by बाय हीटिंग force, बाय रेडिएशन। yes. Heating का भी पढ़ लेते हैं. Since we have read everything, we have already seen how thermal energy is spread out from hotter object to colder object. No matter how good insulation is, energy is transferred from hotter object to its colder surrounding. So we have discussed what energy is, what energy types, energy transfers, and everything. Here is one of the example जिसमें उन्होंने energy transfer को discuss किया हुआ है. We call the Sankey diagrams तो नहीं है, ये flow charts ही हैं, flow diagrams है हमारे पास. और इसमें उन्होंने एक बैटरी की बात की है which is light. अब बैटरी में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? Chemical potential energy. केमिकल। Battery would convert that chemical potential into electrical energy. That electrical energy would be given to a light bulb. That light bulb would convert this energy into light, and surrounding में उसकी जो है वो energy. A part of this light energy would be converted into thermal energy, और वो भी internal energy of the system को क्या करेगा? Increase करेगा. देखो यहाँ पे भी इंटरनल एनर्जी सिस्टम आ रहा है, एनर्जी यहाँ पे भी इंटरनल एनर्जी सिस्टम आ रहा है. सो लाइट battery converts has chemical potential energy. It is converted into electrical energy. Then internal energy increases the internal energy stored, converts to light and move. यहाँ पे maybe there might be another example. Nuclear energy is converted into internal energy. It's converted into thermal energy. Nuclear energy, thermal energy, internal energy, thermocouple, electrical energy transferred. अब देखो सब में ये common आ रहा है point. Surrounding में सब, everything goes to surrounding eventually and converts into thermal energy, और वो उसको increase करता है. अब यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल भी डिस्कस की हुई है कि अब हम अगर हम रॉकेट्स को देखें
तो रॉकेट्स के पास, हमारे पास उसके अंदर क्या स्टोर हुआ होता है? फ्यूल। फ्यूल के अंदर कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारे पास, ठीक है। अब उन्होंने उनको उसका फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम्स में आता है रिगार्डिंग एमसीक्यूज एंड एवरीथिंग। सो द रॉकेट हैज केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगा। अब ये उसने सब यहाँ पे दिखाया हुआ है। केमिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द फ्यूल, दिस इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी जो उसको लिफ्ट देगा। एंड वो हाइट, मतलब उस लिफ्ट की वजह से वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, लाइट एंड साउंड। व्हेन वी हैव दीस प्लस साइंस ना, दिस मींस के yes it is it's all happening at the same time, individually नहीं हो रहा। यानी fuel is converting into kinetic energy, potential energy, thermal, light and sound at the same time। ये रॉकेट की एग्जांपल उसने यहाँ पे दिया हुआ है। इससे ऊपर उन्होंने हमारे पास ये किसकी एग्जांपल दी हुई थी? न्यूक्लियर रिएक्टर की दी हुई थी एग्जांपल उस लोगों ने। न्यूक्लियर रिएक्टर का मैंने आपको पहले भी बताया था कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में क्या होगा? एटम स्प्लिट अप होगा, ठीक है। वो उसके बाद हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। उस थर्मल एनर्जी से हम वाटर को बॉईल करेंगे, वो कन्वर्ट होगा स्टीम के अंदर। दैट स्टीम इज गिवन टू टर्बाइंस, टर्बाइंस रोटेट करेंगे और हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी। वही इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि रेडिएटिव सोर्स इन द आरटीजी, थर्मल एनर्जी। ऑब्वियसली जब वो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर दैट रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, हीट एनर्जी वुड बी प्रोड्यूस्ड रेडिएटिव सोर्स की वजह से, ठीक है। इंटरनल एनर्जी स्टोर, थर्मल एनर्जी ट्रांसफर्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो जो यहाँ पे है। साथ साथ ऑब्वियसली जब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी करते हैं तो सराउंडिंग इंटरनल एनर्जी भी हमारे पास इंक्रीज होती है। ग्रीन बॉक्सेस उसने ट्रांसफर बोला हुआ है, वो उसके अंदर उसने हमें जो है वो सोर्स बोला है। तो नेक्स्ट इन लाइन एज कल हम लोगों ने फ्लो डायग्राम्स देखी थी, आज हम लोग सेंकी डायग्राम्स को देखेंगे एंड वी विल डिस्कस अबाउट द, बल्कि आई एम राइटिंग इट डाउन, आई शो इट टू यू कि सेंकी डायग्राम्स बेसिकली जो फ्लो डायग्राम्स होती हैं उसी टाइप की होती हैं, बट इनमें हम लोग बेसिकली प्रोसेसेस को शो कर रहे होते हैं कि कैसे एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक लाइट बल्ब की बात करें तो लाइट बल्ब के अंदर कौन से यूज होते हैं? सेल्स यूज होते हैं, ठीक है। उसमें सेल्स में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो जब हम स्विच ऑन करते हैं तो वो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, और लाइट एनर्जी के अंदर फिर वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगी और एट द सेम टाइम हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट होगी। तो अगर हम उसको इस फॉर्मेशन के अंदर, ये वाली जो फॉर्मेशन कल हम लोगों ने पढ़ी थी, ये तो फ्लो डायग्राम्स होती है ना हमारे पास। इसके अलावा हम इनको सेंकी डायग्राम्स इस तरह की फॉर्म में भी, जैसे ये केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन फ्यूल एंड ऑक्सीजन कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ द सराउंडिंग। तो इस तरह जब हम डायग्राम्स को शो करते हैं, दिस इज नोन एज द सेंकी डायग्राम्स। जैसे अभी उसने एक सेंकी डायग्राम बनाई हुई है कि पैरामिड्स के अंदर उसने बात की हुई है कि जब केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द वर्कर्स कन्वर्ट्स टू इंक्रीज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एंड इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सराउंडिंग, because whenever we do some work, some not all of that energy is converted into output energy. For example, if we have an output input energy of 100 joules, it's very less of a chances क्या है उसमें से 100% लेस, क्या ऑलमोस्ट वेरी लेस चांसेस होते हैं कि ऑल ऑफ दैट इनपुट एनर्जी कन्वर्ट्स टू आउटपुट एनर्जी, यूजफुल आउटपुट एनर्जी। उसके लिए हम एक टर्म को यूज करते हैं, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को डिफाइन किया जाता है कि यूजफुल आउटपुट ओवर इनपुट। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे पास केमिकल एनर्जी थी, इट कन्वर्टेड इनटू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक्स and increased in internal energy of the surrounding. So out of this, which one would you think is the output energy and which one is the waste energy? Out of these two, which one do you think is the output energy and which one is the waste energy and which one is the input energy here? इंक्रीज इंटरनल एनर्जी वेस्ट एनर्जी होगी और इंक्रीज जीपीए। Yes, because हमें आउटपुट में ये चाहिए था, so this would be the useful output. Input कौन सा बनेगा? We have only this. So efficiency basically जो next topic है हमारा, efficiency is basically the useful output over input, जैसे ये डायग्राम।
तुमने यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, so let me write the definition for you. And Sankey diagrams, do you get the meaning? ऐसे normally diagrams draw करने के लिए आती नहीं है, but you should have the concept के Sankey diagrams. This is how Sankey diagrams are made. इसकी definition अगर हो तो effective way to represent the principle of conservation of energy is using a Sankey diagram. So rocket motor वो उसी को उसमें Sankey diagram है. आप एक conservation of energy को पहले discuss कर लेते हैं, then we'll come back to the efficiency part. Conservation of energy is basically defined as the all forms of energy. Energy cannot be created. जो कल हमने एक example discuss की थी. Yeah. But इसकी जो proper definition होती है वो write it as energy cannot be created nor be destroyed. It can only be converted from one form to another. और इसके अदर वे में ये होता है कि आपके पास जो टोटल इनपुट है इट शुड बी इक्वल्स टू टोटल आउटपुट. दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अब इस आउटपुट के अंदर सारी फॉर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जीज आ जाएंगी जिसके अंदर हमारी इनपुट कन्वर्ट होगी. आउटपुट डज नॉट ओनली मीन्स जो हम यूजफुल आउटपुट करें. इन ऑर्डर टू कंजर्व द एनर्जी को, जैसे मैंने आपको बताया ना कि कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, it only converted into one form to another. So जब भी हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के टॉपिक को डिस्कस करते हैं तो उसके अंदर हम इस पॉइंट को वैलिडेट करते हैं कि जब हम सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज को एड अप करेंगे इन विच आवर इनपुट एनर्जी इज कन्वर्टेड, इट विल बिकम इक्वल्स टू द मतलब इनपुट एनर्जी. सो आउटपुट एनर्जी constitutes of all the forms of energies that input has converted. जैसे सेंकी डायग्राम में हमने क्या पढ़ा था कि उसकी केमिकल पोटेंशियल एनर्जी किस किस में कन्वर्ट हुई है, किन में कन्वर्ट हुई थी? Gravitational potential energy of the blocks and internal energy of the surrounding में. So when we'll add these two, the sum of these two would be equals to the, for example अगर हम इसकी बात करें, so kinetic energy plus gravitational potential energy plus internal energy, this all is the output and this is the input. Whereas efficiency के अंदर we only focuses on the useful output, not all of the outputs that we are having. So the only difference when it comes to efficiency of the system, efficiency is defined as the useful output over input. अब clear सी बात है, numerator value will be less than the denominator value. And input is equals to output plus waste energy. So यहाँ से waste energy किसके equal होगा? If we rearrange this equation, so waste energy would be equals to, Fatma, you need to give the answers. I know what these things are. Waste energy would be equals to, वेस्ट एनर्जी आउटपुट के इक्वल होगी और input minus useful output. For example, अगर हम यहाँ पे, there might be some example here as well with the numerical values. ये efficiency की definition है. You could figure this out from your book as well. As the fraction of the energy supplied that is usefully transferred. जैसे ही है. अब टोटल इनपुट कितना था? 25 joules. आउट ऑफ दैट 15 joule इज कन्वर्टेड इनटू लाइट, लैंप के केस में, एंड 10 joules इज कन्वर्टेड इनटू वेस्ट एनर्जी. सो उसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे तो किसकी इक्वल आएगी? एफिशिएंसी वुड बी इक्वल्स टू, मैथमेटिकली वैल्यूज में टॉप पे क्या आएगा? कौन सी वैल्यू आएगी? ये आएगी, ये आएगी या ये आएगी? एफिशिएंसी का फॉर्मूला किसकी इक्वल होता था? सबसे टॉप यूजफुल आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट. हाँ, तो यूजफुल आउटपुट में से कौन सी बन रही है बल्ब के केस में? लाइट 15 जूल.
with joule? 15. Yes, and the output input was 25. So the efficiency came out to be whatever the values are. इस केस में हमारे पास 100 joules जो है वो input energy है and output कितनी है 15 joule. 15 divided by 100. So which one is more efficient? इसका आएगा 0.15% आएगा. This would be 5, 3, 5 also 25 and 0.0 plus 6.6, 0.6% efficiency आ गया हमारे पास. ठीक है. So efficiency basically help us to understand के how efficient a system is. Or normally petrol जो engines होते हैं they're less efficient than that of the diesel. And I'm telling you कि total energy में से बहुत कम portion ही ऐसा होता है जो कि useful output में convert होता है. बाकी mostly energy हमारे पास waste में जाती है. If we are able to control that dissipation of energy, हम लोग efficient system बना सकते हैं. Efficient system basically means कि हमें with the same amount of fuel काफी productivity output में मिलेगी as compared to the waste energy. So we just, here is the formula for the efficiency, percentage and simple. So if we're discussing about the simple efficiency, it would be useful energy output over total energy input. And again, percentage की बात करेंगे, it would be equals to this factor. Again, on examples discuss किए हैं, I'll walk you through it in a bit. And dissipation of energy is basically the energy in which is the waste energy is basically known as a dissipation energy. Are you clear about what efficiency is? The output, useful output over input. And conservation of energy key definition is very important. Okay, we cannot create or destroy energy. We can only convert it from one form to another, or total input is equals to total output की equal होती है. Do we have any questions from up till here? No. Okay, moving on to the next topic in this book, we have kinetic energy and potential energy formulas that we have discussed in the previous lessons as well. So, energy calculation में सबसे पहले हमने gravitation potential energy discuss की है. What formula do we have for gravitation potential energy? कल ही हमने किया था. What is the formula of gravitation potential energy? MGH. Yes, the formula and definition you remember now. Gravitation potential is defined as the energy with which the force Of with course. which the Earth's gravity attracts the body towards its center. Mg is the weight in h. Here is the formula. mgh, difference of height. Delta means हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ. डेल्टा किसको इंडिकेट कर रहा होता है? एनर्जी चेंज, मतलब चेंज को शो कर रहा होता है. उसके आगे जो भी वैल्यू पुट कर देंगे तो उसकी बेसिकली एनर्जी के चेंज को वो इंडिकेट कर रहा होगा. सो डेल्टा बेसिकली मीन्स एनर्जी चेंज. ओके, सो यहाँ पे हाइट 0 है, देन यहाँ पे एट अ सर्टेन हाइट है, एंड देन यहाँ पे सर्टेन हाइट के ऊपर है, यहाँ पे 2.5 है, यहाँ पे 1 मीटर्स के ऊपर है. तो जितना ज्यादा हाइट होगा उतना ज्यादा उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा. सो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली कंसिस्ट ऑफ mgh. Mass and g की वैल्यू विद इन द अर्थ सरफेस चेंज नहीं होती है. सो द ओनली थिंग थ्रू विच वी कैन इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी इज बाय इंक्रीजिंग द height of that object. So after the potential energy, we have kinetic energy. Kinetic energy is the energy possessed by a body due to its motion. Moving objects के पास जो energy होती है, that is known as kinetic energy. That is the next topic, and the formula we have is 1/2 mv square. Again, यहाँ पे velocity change को ही normally indicate कर रहे होते हैं, because there would be a certain value of kinetic energy, sorry, velocity of an object, and when a force is applied तो उसकी वजह से उसमें जो change of velocity आएगी. तो normally हम changes को discuss करते हैं, but keep one thing in mind is कि all forms of energies are scalar in nature, that we do not need any direction for that. The only thing that we need to keep in our mind is the magnitude of that quantity, nothing else. So यहाँ पे उन्होंने लिखा भी हुआ कि as kinetic energy is a scalar quantity, so only the magnitude is important.
ठीक है, सेम गोज फॉर द पोटेंशियल एनर्जी, उसके अंदर भी हमें वो ओनली हैव टू फोकस ऑन व्हाट पोटेंशियल एनर्जी इज, sorry, magnitude of that quantity is. And all forms of energies will have the same units, which is joule. And joule किसकी इक्वल होता है? How do पर we डिग्री define joule? 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हम उसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं हर केस के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लें 1/2 mv², वी आर सेइंग दैट इट्स joule which is equals to किलोग्राम मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 1/2 का कोई यूनिट नहीं होगा, मास एज अ यूनिट ऑफ किलोग्राम एंड वेलोसिटी एज अ यूनिट ऑफ मीटर पर सेकंड, तो उसका स्क्वायर है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली व्हेन वी पुट इट इनटू mgh, मास का यूनिट क्या हो गया? किलोग्राम, g का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड h का यूनिट क्या होता है? मीटर, सो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, so which is equals to joule. So both these form of energies are scalar in nature, that is only their magnitude is important. Secondly, they have the unit of joules. The formulas are mg delta h and 1/2 mv square. यहाँ पे एक और फॉर्मूला भी बहुत इजी है। Whenever we talk about energy conservation, अगर कहीं पे भी बात होगी that energy is conserved, there is another formula which means कि kinetic energy is equals to potential energy. ठीक है, so using this formula is very important. For example, they have given us a certain values and asking us to find out the height of the object. तो height of the object अगर हम लोग उसमें calculate करेंगे, if we make h the वो, तो m cancel out हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, m हमारे पास cancel out हो गया, and this 2 will be left here, and g यहाँ पे आके divide हो जाएगा। So height किसकी इक्वल आ जाएगा? Height is equals to 1/2 वी स्केयर ओवर 2g की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और अगर हमें वी स्केयर को कैलकुलेट करना है तो वी किसके इक्वल आ जाएगा? दिस 2 विल बी मल्टीप्लाइड हेयर, mm से कैंसल आउट हो जाएगा। अगर हमें वी को कैलकुलेट करना है तो m से कैंसल आउट हो जाएगा, ये 2 तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो वी वुड बी इक्वल्स टू √2gh. Keep this in mind. These formulas are only used when energy is conserved. Okay. ओके। इस फॉर्मूला को नहीं भूलना, ये बहुत जगहों पे यूज होते हैं। अगर उसने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी हुई है, ही इज आस्किंग अस टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो हम काइनेटिक एनर्जी की जगह पे वो वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसने 12 जूल्स दी है एंड ही इज आस्किंग अस टू फाइंड आउट द हाइट, 1/2 mv² इज इक्वल टू mgh, काइनेटिक एनर्जी की उसने वैल्यू आपको दी हुई है, इज इक्वल टू mgh पुट करके हम h की वैल्यू निकाल देंगे। और if he has given us the value of potential energy somewhere, हम उसकी जगह पे potential energy and is equals to this factor पुट करके इसका आंसर निकाल देंगे। कभी कंफ्यूज नहीं होना। इफ एनर्जी इज कंजर्व तो 1/2 mv² इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल हमने बात किया है ना कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट्स टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, और कुछ भी नहीं होता उसके अंदर। वही कॉन्सेप्ट हमने अपने माइंड में रखना है और उसको कंफ्यूज आपने बिल्कुल भी नहीं करना। एनर्जी ये 1/2 mv² इक्वल टू mgh यही बता रहा है कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू another form of energy and vice versa. All of the input energy is converting into the output energy only if energy of the system is conserved. So overall, in this chapter, we discussed the following points which I'm writing down here. सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि what energy is. Energy की two types थे हमारे पास, that was mechanical and what was the second one? Electromagnetic. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। And then this was further converted into kinetic energy and potential energy. This was converted into three: chemical potential energy, elastic potential energy and gravitational potential energy. फिर हमने एनर्जी स्टोर्स एंड ट्रांसफर्स के बारे में बात की थी।
एनर्जी स्टोर्स एंड ट्रांसफर्स को हमने डिस्कस किया था कि देयर आर सर्टेन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जिनको हम स्टोर कर सकते हैं, देयर आर सर्टेन फॉर्म ऑफ एनर्जी जिनको हम सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका टेबल हमारे पास बिल्कुल स्टार्ट के अंदर था भी, एनर्जी स्टोर्स एंड उसके ट्रांसफर का। काइनेटिक एनर्जी, सो सॉरी, जो पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया हमारे पास एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज व्हिच कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड दस। तो kinetic energy, GP, chemical, elastic, nuclear, internal and electrostatic are the energy stores कि हम इनको store कर सकते हैं and these forms of energies can only be converted. Then हमने discuss किया था कि energy could be transferred by force, heat, radiation and what was the last point? Electric current. Electric current. Shabash. There are four ways through which we can transfer energy, which is by force, by heating, by radiation and by electric current. Energy stores and transfers के बाद energy transfers के बारे में बात हुई थी and उसमें हम लोगों ने flow diagrams को discuss किया था. These are the flow diagrams and जो green boxes होते हैं वो किसको show कर रहे थे हमारे पास? एनर्जी ट्रांसफर्स को, ये किसको शो कर रहे थे? एनर्जी स्टोर्स को। एंड यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते नहीं है। द ओनली थिंग वी नीड टू कीप इन आवर माइंड इज कि एनर्जी स्टोर एंड ट्रांसफर का मीनिंग क्या होता है एंड कन्वर्जेंस किस तरीके से हो रही है। कन्वर्जेंस जरूर आएंगी, इस टाइप की कन्वर्जेंस आती हैं कि वो आपको एक सर्टेन टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स दे देगा एंड ही विल आस्क यू कि जी इसमें आप बताएं कि ये एनर्जी किस किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो ये रॉकेट की एग्जांपल्स जो सर्टेन जो बुक में डिस्कशन नॉर्मली उन्हीं को वो रेफर करता है, सो दैट स्टूडेंट माइट नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। सेंकी डायग्राम्स एंड एनर्जी कंजर्वेशन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एंड एनर्जी कंजर्वेशन को शो करने के लिए हम हेल्प लेते हैं सेंकी डायग्राम्स में से। दिस इज हाउ द सेंकी डायग्राम्स लुक लाइक एंड इसमें भी हम वही एनर्जी कन्वीनियंस को शो कर रहे होते हैं। एनर्जी, फिर हमने एफिशिएंसी को डिस्कस किया and we discussed about the kinetic energy and potential energy formulas and their respective applications and units as well.